अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज की वीडियो वोकैबुलरी से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग हमेशा एक ही मसले से गुजर रहे होते हैं जब वो अंग्रेजी जुबान सीखते हैं या सीखने के लिए कहीं जाते हैं, तो वो एक ही सवाल करते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से या एक ही मुश्किल अपनी बताते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से कि उनके पास इतनी वोकैबुलरी नहीं है। इसकी वजह से वो नहीं बोल सकते अंग्रेजी जुबान। तो चले आज के वीडियो में हम ये इस सवाल का हल तलाश करते हैं, how to get enough vocabulary and from where to get the vocabulary. So what is the source that can give us more vocabulary, a lot of words, good words, appropriate words, impressive words, which can influence others when we speak or use that kind of words. This kind of thing comes to everybody's mind. They try to search, they try to find out from different sources, and they gather a lot of good vocabulary. So we want to tell them that where that all vocabulary come into our think tank. Let's think for a moment. Yes, parts of speech or types of words like noun, pronoun, verb, adjectives, adverbs, conjunctions, prepositions, articles, interjections. So which plays the more important role in giving the vocabulary? चले थोड़ी देर के लिए देखते हैं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम बचपन से ही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स ये करते आ रहे हैं, फिर भी हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है। नहीं, लेकिन हमने कौन सी टाइप्स ऑफ वर्ड्स यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो कौन से ऐसे टाइप्स हैं या वो ऐसी काइंड्स हैं जो कि हमें मैक्सिमम वोकैबुलरी देती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया जाता है two groups. They are divided into two groups. The first group is called open class words and the second group is called closed class words. अब लफ्जों से वाज़ह हो रहा है कि ओपन का मतलब entry of new words. Closed means no entry at all, but sometimes, not all the time, but very rarely, but I think even rarely and rarely does what comes in closed class words. So let's talk about open class words. Open class words: noun, verb, adjectives, and adverbs. But the common are the noun, verb, and adjectives. जी हाँ, आपकी सबसे ज्यादा वोकैबुलरी जो आती है वो आती है नाउन से, वर्ब से और एडजेक्टिव से। यानी कि you cannot ignore the parts of speech. You cannot jump into a different kind of a technique to get a words, or because any word from any source will come is going to link up to noun or verb or adjective. तो हमें जब भी कोई चीज पढ़नी है, रीड करनी है या सुननी है, तो हमने इन तीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही अल्फाज की कह लें कि ये
building बनाते हैं, like you make big building from these 3 types of words. So अब एक और सवाल यहाँ एक और सवाल भी आता है बहुत सारों के जहन में कि अच्छा अब ये कहाँ से हम देखें, सुने या हासिल करें. एक तो रीडिंग again and again. If you're a good reader, you definitely can be a very, very good speaker, no doubt at all. If you're a good reader, you are having a lot of words into your mind, beautiful words, different words into your mind. लेकिन और sources कौन सी हैं? और sources में आ जाते हैं songs, जिसमें डेली रूटीन के वर्ड्स को बोला या गाया जाता है. मूवीज आ जाती हैं. Those movies, I'm not talking about science fiction and some movies that are outer space or something like beyond the future or very far future movies in which they talk about a different kind of totally things that are not related to our real life. Movies that give you a very simple map of the life. ठीक है. और इसके अलावा BBC News, that is the very good source. Don't listen, just don't watch it, just listen like a radio. Just make a habit of listening it, because you listen, you concentrate more and you get more words. Take a recent example. अच्छा, अब words क्योंकि open class है, नए वर्ड्स आते हैं, पुराने जो वर्ड्स हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं. पुराने वर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ओल्ड वर्ड्स या ओल्ड बुक्स के अंदर चले जाते हैं. Recently we are very frequent about the word quarantine. That is a new word that is being introduced in this kind of situation, in this kind of pandemic situation. Which means quarantine means isolation. So isolation, quarantine, they have both same meaning, but they are used in a different context. This is how new words enter. This is how they get familiar to the people. In this way, you add vocabulary, you add new words into your think tank, and this is how you develop a good source of new words. आज तक के लिए इतना ही. और इसके अलावा go to Google Classroom. I haven't given an activity related to vocabulary. I have given vocabulary words. You're going to select a topic and then write on it. Allah Hafiz and bless you all.